as we speak, the visuals that we're bringing into you on your screens right now are of a Congress meeting taking place with senior Congress leaders on the ED investigation that's taking place right now with Sonia Gandhi. My colleague, our senior editor Pallavi Ghosh, should bring us a lot more context. Pallavi, just bring us more context here. Also tell us who are the leaders in this photo. We're going to try to bring Pallavi on to tell us more. We already know the Congress party is strategizing, as you saw already, protests taking place at the AICC. But what is the scale of their national protests? And will this affect the parliamentary proceedings today? Of course, it is expected it will, but to what degree will it? These are some of the questions that it is important to ask. My colleague, our senior editor, Pallavi Ghosh, with us right now. Pallavi, we're showing our audiences this photo. Obviously, most of the leaders are turned away from the camera. It's difficult to see who's at that meeting. Could you bring our audiences more information? So, well, all the Congress MPs in Parliament are holding this meeting, and this is just ahead about what is going to be their strategy inside Parliament. And even as we speak, Hebe Eden, Member of Parliament from Kerala, has already given an adjournment notice in Lok Sabha because he wants a discussion and an explanation from the Speaker. Why is it that the 4 Congress MPs were suspended yesterday? So we're going to see full-on protests by the Congress now inside Parliament, not just on the Sonia Gandhi issue, but also on the suspension of the 4 MPs, which they are saying is a violation of all parliamentary democratic norms. All right, Pallavi. And if you could tell us, what is the Congress's strategy in terms of bringing this up at all in Parliament today? Is it expected to be brought up? Well, I mean, the strategy is that as an opposition political party, you take on the government. Right. And, they're going to make the point that, we are raising people's issues and the government doesn't want to discuss those issues. And they arbitrarily suspended 4 of those Congress MPs. And just to stress on this fact, once again, adjournment notice given by a Congress MP. They want a discussion and an explanation from the Speaker as to why the 4 of them have been suspended. Okay, we'll be tracking those developments. My colleague Pallavi Ghosh is going to be bringing us updates straight from the Parliament in just a little while from now. Remember, the monsoon session of Parliament goes back into session at 11 a.m. Next, we have for you what the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot had to say on the fact that Sonia Gandhi has been called in for a second day of questioning. Take a look. ये जो जेपी नड्डा जी ने जो कमेटी बनाई है भेजने के लिए वहाँ पर बरसाना के अंदर और हमारे कामा डी के अंदर, वो घटना बिल्कुल दूसरी तरह की है। वहाँ माइनिंग सब लीगल हो रही है, इलीगल नहीं है वहाँ पर। अगर जेपी नड्डा जी को ये भी फीडबैक नहीं है कि वो कोई अवैध खनन नहीं है वहाँ पर, वहाँ अवैध खनन है। 2004 से वहाँ आंदोलन चले पहले भी सरकार आ गई थी बीजेपी की, फिर आगे हमारी। हमने 100 माइंस जो लीगल माइंस थी, वैध माइंस थी, उनको हमने शिफ्ट किया है पार्टी के अंदर। पहले भी सरकार चाहे हमारी थी चाहे बीजेपी, इनकी खुद ही पार्टी सरकार थी, शिफ्ट किया गया था। अभी भी जो 45 माइंस है वो तमाम लीगल माइंस वहाँ चल रही है। वह कोई इलीगल माइंस नहीं है, वो इलीगल माइंस का केस ही नहीं है। वो साधु संतों की मांग है कि जो ये पहाड़ जो है जहाँ माइनिंग हो रही है वो हमारा धार्मिक आस्था का पहाड़ है और उसमें परिक्रमाएं वगैरह होती है हमारी। तो आप सब माइंस यहाँ लीगल भी है तो बंद करो। लीगल को बंद करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हजारों मजदूर काम वहाँ करते हैं, उनको संदेश करना होता है। पब्लिक का इकोनॉमी निर्भर करती है वहाँ पर, थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। संदेश करेंगे वरना वो रिवोल्ट कर देते। तो हमने बहुत तरीके से जा कर के इसको आगे बढ़ाया और फिर वो आप देख रहे हो क्या घटनाएं, आत्मदाह की धमकी दी गई, फिर ऊपर चढ़ गए टावर पे, उसके बाद में समझौता हो गया, कह दिया गया भाई आपकी मान लेंगे, इस पूरे एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद में क्या कारण था कि एक साधु महात्मा जी विजय दास जी चुपचाप गए, सुबह जाके वो किसी रूम के अंदर बाथरूम में जहाँ भी था जाके वो आत्मदाह कर लिया। ये क्या, ये भी एक राज है अपना आप के अंदर। हमने इसीलिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाया, एक जांच बैठाई मैंने, पता तो करें भाई कारण क्या था। जब सब कुछ हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस साधु संतों के साथ हो गई, विश्वेंद्र सिंह जी की जो हमारे टूरिज्म मंत्री वहीं के वो एमएलए हैं, उनके साथ